हेलो एवरीवन। सो 11th अकाउंटेंसी, इससे पहले मैंने आपको करने को दिया था provisions and reserves. Now we are going to start with one of the important chapter, and actually it is very different from rest of the chapters, like whatever we have covered till date. Okay, so bills of exchange is the main heading. uh, Let me just recall you few points whatever we have already done related to this, so that you can relate why we are doing this chapter and what is it all about. Okay, so if we talk about bills of exchange, but you remember कि whenever there is debtor or creditor, and we are supposed to write a bill on our debtors, or we are going to like sign or accept the bill from our creditor, तो उसी को बोला जाता है bills of exchange. Ultimately, bills receivable and the bills payable are bills of exchange. ठीक है, तो मैं आपको पहले तो एक पूरी प्रोसीजर बता देती हूँ हाउ दिस ऑल वर्क्स, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन चैप्टर. ठीक है बच्चों, वेरी केयरफुल. जो भी टॉपिक करेंगे, साइड बाय साइड सॉल्व द क्वेश्चंस. लगातार वीडियो बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना. दिस विल बी नॉट एट ऑल यूजफुल. ट्राई टू वॉच अ पार्ट, सॉल्व सम क्वेश्चंस. वैसे तो मैं आपको बीच बीच में टाइम भी दूंगी और खुद भी नोटिफाई करूंगी कि यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस हियर, बट फिर भी प्लीज डू नॉट चीट योर सेल्फ, एज आई ऑलवेज से. इसको आराम आराम से करना. ओके, चलो लेट अस अंडरस्टैंड. दिस इज अ बिजनेस. ओके, we have some customers, those who purchase on credit, that means debtors. Okay, and there are some parties from whom we purchase, like our suppliers. We purchase some inputs on credit, so that person is called as creditors. ठीक है, अब होता क्या है, इफ यू डू नॉट ट्रस्ट, और या फिर आपको कोई भी श्योरिटी चाहिए, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ना, you have to convert these debtors and creditors into bills. Okay, so creditor can be converted into bills payable. इसको कैसे याद रखोगे? Definitely we need to make payment to the creditors. Okay, that's why it will be payable. And if we talk about debtors, we can convert that into bills receivable. We need to accept money from debtors. We are going to receive money. Okay, and जो creditors को हम convert करते हैं, that will be converted into bills payable. Actually creditors ही हमसे sign करा कर रखेंगे bill, and that will be bills payable. Okay, I hope इतना clear हो गया. अब इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से समझिए. सबसे पहले आप गुड्स किसी को सेल करेंगे ऑन क्रेडिट, दैट कस्टमर विल बिकम योर डेटर. और फिर जब वो आपको फ्यूचर में आप बिल ड्रॉ करेंगे, तो यू विल बी ड्रॉअर, because you are going to draw the bill, write the bill. And debtor who need to accept it, called as drawee. Okay, drawee मतलब जिस पर बिल बनाया गया है, ड्रॉअर मतलब जिसने बिल बनाया. Now, ठीक है, तो ड्रॉअर ड्रॉई समझ आ गया. लेट्स रीड थियरी. First of all, they have defined bills of exchange. So according to Indian Negotiable Instrument Act 1881, please remember this act's name, because this can be asked in an MCQ. Okay, so a bill of exchange is an instrument in writing. An unconditional order, मतलब कोई भी condition नहीं लगानी चाहिए, signed by maker. So अब सबसे पहले हम करते हैं इसकी definition. इसमें हमने ये पढ़ लिया ना कि इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा.
अब डेफिनेशन से कि अनकंडीशनल ऑर्डर जो मैं आपको बता रही थी, अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए और मेकर को साइन करना, मतलब द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट बिल हैज टू साइन डायरेक्टली टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, जितना लिखा होगा उतना ही पे करना, टू और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब या तो जिसके नाम लिखा है उनको, या कोई अगर आगे ऑर्डर किसी और पर्सन के लिए कर दिया जाए तो उनको, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट बिल एट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले है इट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटर्न होना चाहिए, ऑरल नहीं, कंटेन एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं, ठीक है, पेमेंट करने का ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तभी पेमेंट होगी एंड सो ऑन। अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, अमाउंट एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी अमाउंट कह दी जाए उतना पे किया जाएगा, नॉट दैट शुड बी पर्टिकुलर अमाउंट। फिर डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, ओके, और मेकर साइन करेंगे इसको, एक्सेप्टर भी साइन करेंगे, and I have already told you कि मेकर is drawer, acceptor is drawee. The amount mentioned in the bill is payable either on demand or on expiry of its period, मतलब या तो जब भी ड्रोवर उसको डिमांड करेगा तब पे करनी है या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड की एक्सपायरी। The amount is payable either to the bearer of the bill or to specified person or his order. This is the same point which we have covered right here. Okay? And it bears a stamp according to its amount and is drafted on a stamped paper. Stamp paper पे इसका होना चाहिए काम. Now, what are the parties to bills of exchange? Number one, drawer, मतलब he is the seller or creditor, जिनको पैसा रिसीव करना है, वो राइट या ड्रॉ करेंगे बिल, इसीलिए उनको बोला जाता है ड्रॉअर, and bills of exchange is signed by drawer of, all right. Number two is drawee or acceptor, मतलब जो परचेज कर रहे हैं या फिर डेटर, on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो बिल by writing the word accepted on the bill and then sign it. अभी ये बिल्कुल मत भूलना कि दोनों पार्टीज को साइन करना ही पड़ेगा। And a bill is called as a draft before it is accepted. Please point noted. If this is a bill and it is not yet accepted or signed, that will be just a draft. Though it can be draft, it can be bill. Depends whether it is accepted or not. Then pay. Pay का मतलब the person to whom the payment is to be made. जिनको आपने पेमेंट करनी है. The drawer himself or the third party may be the payee of the bill. The drawer will be the payee of the bill. And if he retains the bill till the date of maturity and receives the payment, ठीक है, तो मतलब अगर ड्रॉअर ही अपने पास बिल रख रहे हैं और उसको मेच्योरिटी तक रिटेन भी करेंगे तो डेफिनेटली ही विल बिकम द पे। द बैंक में ऑल्सो बी द पेई, बैंक पेई हो सकता है रिक्वायर्ड इफ यू हैव डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। हम ये अलग अलग सिचुएशंस केसेस पढ़ेंगे, when it is discounted, when it is dishonored, when it is kept with the main drawer, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। इफ इट इज एंडोर्स मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी को अगर दे दिया ये, तो दैट थर्ड पार्टी विल बिकम एंडोर्सी। एज सच drawer himself or the bank or the endorsee may be payee of the, ठीक है, तो कोई भी इसका पेई हो सकता। They have given an example. On 1st July 2019, Karuna Sagar of New Delhi sells goods. पहली बात सेल किया ना, तो ये क्रेडिटर बन सकते हैं, डेटर नहीं। तो ये ड्रॉअर होंगे, ड्रॉई नहीं, पेई होंगे, पेयर नहीं, ठीक है। Value of 5 lakh to Prem Kishore of Jaipur on credit, the payment of which is to be made after 2 months. Karuna Sagar draws a bill on Prem Kishore. Karuna Sagar ने एक बिल लिखा प्रेम किशोर पे, मतलब प्रेम किशोर इज द पर्सन। उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और वापस दे दिया करुणा सागर को एज अ प्रूफ। इन सच अ बिल करुणा सागर विल बी कॉल्ड एज ड्रोअर, जिन्होंने बिल बनाया,
Prem Kishore जो customer थे, he'll be acceptor या drawee, and the specimen form is set as below. अब format देखिए कैसा बनाया जाता है. The specimen of bills of exchanges. New Delhi, 1st July, the date and place. This is the amount. Then they have written 2 months after date. Pay to me or my order the sum of rupees 5 lakh only for value receipt. तो यहाँ उन्होंने स्पेशली लिख दिया ना, या तो मुझे पेमेंट करनी है या मेरे ही ऑर्डर पे, किसी और को. So this is signed by Karna Sagar, the drawer, and accepted or signed by customer or drawee as well. ठीक है. तो इन्होंने यहाँ लिख दिया कि Karna Sagar is drawer as well as payee of the bill. सपोज कि उन्होंने किसी को भी एंडोर्समेंट नहीं किया, और इनकेस अगर दे हैव एंडोर्स्ड इट टू उमा शंकर, तो उमा शंकर को फ्यूचर में बिल मिलेगा ना. लुक, as simple as that. If I am selling something to you, Vanshika, let's say, तो I am drawer, मैं बिल बनाऊंगी, मेरे लिए दिस विल बी बिल्स रिसीवेबल, वंशिका विल बी ड्रॉई. ठीक है. और ड्रॉई के लिए ये होगा बिल्स पेबल. इन केस मैंने किसी और को पैसे देने थे, लेट्स से आरव, if I have paid this money to आरव, तो आरव will be endorsee. ओके, तो वो जाएगा एंडोर्सी, क्योंकि हमने इनको एंडोर्स किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ फ्यूचर डेट पे वंशिका मुझे पेमेंट ना करके आरव को दे. तो he'll be endorsee and I'll be endorser. आई होप इट्स क्लियर. एक बार ये सिचुएशन खुद से क्रिएट करिए, कोई भी 2-3 एग्जांपल्स लेकर खुद सोचो कौन ड्रॉई हो जाएगा, कौन एक्सेप्टर होगा, हु विल बी ड्रॉअर एंड एंडोर्सी, एंडोर्सर. ये सारे टर्म्स एक बार समझने की कोशिश कीजिए. ओके. एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नंबर 1, हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे सेल परचेज कर सकते हो आप गुड्स. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज अ रिटन एविडेंस ऑफ द डेट. इट इज अ प्रूफ कि आपने गुड्स परचेज करे और आपको अमाउंट अभी देनी है. सेकेंड वन इज लीगल डॉक्यूमेंट. इट हैज लीगल वायबिलिटी. इट कैन बी लाइक shown as an evidence in the court as well. एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये लॉ की आइज में वैलिड है. थर्ड इज डिस्काउंटिंग फैसिलिटी. देखो डिस्काउंटिंग का मतलब, लेट्स से आई हैव गिवन अ बिल टू शाह. ओके, दैट मीन्स शाह के लिए ये मान लो बिल्स रिसीवेबल है और मेरे लिए बिल्स पेबल है. Shah wanted money in advance, so what Shah has done? He has discounted this bill from the bank. तो इसका मतलब क्या होता है, ये बैंक के पास गए, इन्होंने कहा कि Ayushri is gonna pay me this amount after 3 months, but I need this money right now. And just 1 month has passed. या अभी टाइम हुआ ही नहीं है, बिल मिलते ही मैं चला गया. ठीक है, शाह चले गए. तो बैंक will be paying some amount to Shah आफ्टर डिडक्टिंग सम अमाउंट, क्योंकि वो अगर आपको एडवांस में कुछ पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कम देंगे ना. इफ दिस बिल इज ऑफ 10,000, दे माइट गिव यू 9.5. अंडरस्टैंडिंग? 500 कैन बी टेकन एज डिस्काउंट बाय बैंक. लेकिन आपको तो एडवांस में पैसा मिल गया ना, आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मैच्योरिटी डेट की. मैच्योरिटी पे व्हेनेवर आयुषी विल बी पेइंग सम मनी, तो शी विल पे डायरेक्टली टू बैंक, नॉट टू शाह. So the holder of a bill need not wait till the due date to receive the payment, ठीक है, as he can easily turn into cash by discounting it from bank before its due date. Fourth point is endorsement possible. Endorsement का I have told you ना कि if I have received some bills receivable, okay, I have given someone to sign it, he or she has accepted it, तो मेरे लिए हो गया bills receivable.
So if I am going to provide it to someone else to whom I need to make the payment, so that term or that process is called as endorsement. I'll be endorser and the person who is receiving it will be endorsee. Okay, तो वो यहाँ पर possibility है. It is called as negotiable instrument. Fifth point is relief from sending reminders. बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है. Everything is written on the bills of exchange. You just need to check it and you'll get all the details. Sixth point, helpful in planning cash operations. Obviously, it will help you to plan all about cash. Its payment, its receipts and all. Okay? Seventh point, convenient means of making foreign payments. Bills of exchange say you can easily make any type of foreign payments. And it will definitely reduce your risk. And another part is risk as well. Saving of money in circulation. दैट मीन्स अगर आप मनी सर्कुलेट कर रहे हो ना तो उसमें उसकी वर्थ थोड़ी सी है वो वेस्ट होती है तो इट्स बेटर यू कैन जस्ट लाइक थोड़ा सा टाइम रोक कर पैसे देन यू कैन पे so they have written by making payment through bills the money in the circulation will not be used hence result in the saving of wear and tear in the currency वो करेंसी सर्कुलेट नहीं होगी ना बार बार आप बिल्स डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं and convenience for the purchaser because they can directly accept the bill or purchaser gets time to make its payment in future. Okay.